Okay, thank you. Okay, so hello everyone. I'm Sanjeev Bista, and today onwards I will be teaching you this quantitative and reasoning for competitive exams. Particularly, like as I have written here, you see Assam State Govt exam, SSC, CHL, CGL, banking exams and other exams. So आज बड़ी शुभ दिन है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही मेरी एक आपके साथ नई संपर्क आई हैव बीन इंट्रोड्यूस टू यू इन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे, गणेश पूजा, जहाँ अपनी भारतीय परंपरा पे कोई भी पूजा हो, घर प्रवेश हो, पहले अपने गणेश जी को ही पूजा किया जाता है। तो मैं सौभाग्यपूर्ण हूँ कि आप सबके समक्ष इस दिन, मतलब इस बड़े शुभ दिन पे आपके सामने आने की मुझे एक सौभाग्य मिली है। तो अब नाउ what is what we are going to do in this class is that ki as we are aware that quants and reasoning forms very important part of most of the competitive exams, right? So I'll be teaching you this quant and reasoning through these live classes, right? Okay, so let me introduce you again. I'm Sanjeev Bista, right? So without as this is my first class and it is an introduction to all of you, I will be not bricks in my class and trying to explain you this as this topic today what I have given. You see, LCM and HCF first we'll be dealing, but before we proceed now, whenever we start something we need a motive of doing that thing. हमें उसके लिए एक उद्देश्य चाहिए, right? Okay, competitive exams हम सब आज तैयार करते हैं और compete करते हैं, पर one of the most important thing in life, not in the competitive exams, is to compete with self. And this journey with me, your Sanjeev sir, will be a journey to compete with ourselves, not with anyone's. Okay, आज थोड़ा करेंगे, कल उसको और बेहतर करेंगे, इस तरह। हाँ, गुड इवनिंग सुष्मिता दी जी। ओके, सो आज और थोड़ा अच्छा करेंगे, कल और से और अच्छा करेंगे। सो इन द बोर्ड एज यू कैन सी आई हैव रिटन फॉर यू, ओके, not only for me as a teacher, it is also for me too, right? Okay, see, have you ever thought of competing with yourself? सब तो हम एग्जाम्स कंपटीशन के पीछे भागते हैं और भागना भी चाहिए, और जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, competition is is a very important part of our society and we should be there. But at an individual level, अब व्यक्तित्व के रूप में हमने कभी सोचा है कि बैठ के कि आज मैं सुबह 9 बजे से लेकर खुद के साथ कंपीट करूंगा, कल जो मेरी क्वांट्स या रीजनिंग की नॉलेज थी उसको हम और बढ़ाएंगे, ऐसा. So that is important, okay, to excel in anything. So hello Popori Hazarika ji, good evening. So now we'll start with the questions, and hope you like to remember this line and put bring into use in your life, right? आपके लाइफ पे आप या व्यक्तिगत जीवन पे आप प्रयास करेंगे कि इसका आए. तो बेसिकली मैं आई विल नॉट टेक यू वेरी टफ क्वेश्चंस और direct come to very difficult questions, but we will be going slow. हम धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि आप सब जो अभी इस लाइव क्लास पे आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे होंगे पहले से एक्सपीरियंस वाले होंगे जिसको पता है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको पहले से पता नहीं है. सो वी नीड टू गो टुगेदर एंड स्टेप बाय स्टेप आप जो क्वांट्स के चैप्टर है और रीजनिंग के चैप्टर्स, हम स्लोली फ्रॉम आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है स्लोअर साइड टू लोअर साइड विल बी मूविंग, राइट? ओके, सो hello, good evening everyone. Yeah, Abhijit Das ji, right? Okay, not new, but a different initiative. Okay, and thank you for your comment.
सो लेट अस स्टार्ट विथ, ओके हम शुरू करते हैं, राइट? ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, ओके हम शुरू करने से पहले लेट अस ट्राई टू रिकॉल हम जो आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं, जो एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चंस है, इट विल बी बेस्ड ऑन, एंड दिस इज द मोट ऑफ क्लास, है ना, कि हम सब तैयारी तो कर रहे हैं, तैयार कर रहे होते हैं, पर क्या होता है कि बेसिकली एग्जाम्स में हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है कि वी कांट रिमेंबर, okay, I'm from the same state, okay, Assam, right? Okay, so two numbers product of HCF and LCM, right? Okay, so हम क्लास तो कर रहे होते हैं, पर कि हम जो फॉर्मूला, हमें जो फॉर्मूला चाहिए, वो जो मेमोरी में रहना चाहिए, वो नहीं रहती है। तो दिस इज अ टेक्निक टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। हम एग्जाम प्रिपरेशन एक टेक्निक भी होती है कि आप जब भी तैयार करने वाले हो, तो आपके एक फॉर्मूला बुक रेडी चाहिए कि डायरेक्ट रेफरेंस कर सको, राइट? ओके, राइट, ओके। So let us move to next part of the class, right? Okay, अभी मेरी introduction हो गया, I have given you an introduction and I saw कि through the comments कि most of you, आप सब भी अपना comments pass कर रहे हैं और you are giving your own introduction and I'm thankful for that, but I seek your cooperation and beyond that, उससे हटकर डूइंग समथिंग इन अ वेरी फोकस मैनर, कि कुछ भी कर रहे हैं तो फोकस मैनर में, कितना कर रहे हैं या जो नहीं, कि फोकस मैनर, 2 करे, 4 करे, 5 कर रहे, और प्रयास करेंगे कि हम आपको सबसे सिंपल, साधारण रूप में, इन अ वेरी सिंपल रूप में आपको क्वांट्स और रीजनिंग समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी भी चैप्टर सब्जेक्ट्स आई विल बी टीचिंग यू, that will come later, but for now we'll be coming back to this quants part, okay? So first and foremost, अभी आगे बढ़ते हैं, ओके? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू, हमें फॉर्मूलास को याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, सो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि तैयारी जब करने शुरू करते हैं, प्रैक्टिस ऑन योर टेबल एंड डेस्क, देन यू राइट आउट द फॉर्मूलास, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो करने वाले, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ रखा है, ऐसे ही फॉर्मूला लिख के लिखा के आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, राइट? ओके, 10 to 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऑन द सेम थिंग, राइट? ओके, सो I have given you here and will the application of this formula, हम जो एग्जाम अपेयर करने जाते हैं, बाकी बाकी जो होते हैं एग्जाम, उसके लिए जो फॉर्मूलाज चाहिए, जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको यहाँ दिए। सो लेट अस सी, ओके, कि पहले तो मैंने आपको इन फर्स्ट स्लाइड आई शो यू कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की दी है। आई एम नॉट गोइंग टू दी, हम आपको उसकी जो कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरी है, I will not be dealing with that in a detail, but बीच में I will be mentioning that, because this very live class is purposely made to deal with MCQs, okay? अपने जो MCQs है, उन MCQs के लिए particular डिजाइन किया गया है, और आप सबके लिए शायद that will be helpful also, right? Okay, so let us move on, but okay, so I hope you can see all, yeah, okay. So there is a bit there is slow in internet today, because it may be due to rain, so bear with us, or even that in आपके side पे भी हो सकता है. So first we start with a very basic question, okay? I think if you can see or not, okay? Now say find the LCM of the following, right? Okay, so find the LCM of the following, right? So we know LCM means least common multiple, right? Okay, right? LCM means least, LES. We are aware of this. I'm just writing for those that common multiple, right? Okay. अभी देखो, कोई भी मैथ्स की क्वेश्चंस डील करते समय, whenever you deal with any मैथ्स की common least common multiple, right? So कोई भी मैथ्स के टर्म्स को हम लोग डील करते हैं, whenever you are dealing with any मैथ्स क्वेश्चन, हमें उसके टर्मिनोलॉजीज, जो बातें लिखी है, लीस्ट इंग्लिश में क्या होता है, सबसे छोटा, कॉमन यानी सब 10 चीज में जो कॉमन है, ब्लैक मतलब ब्लैक वाली कॉमन, मल्टीपल मतलब अभी देखिए मल्टीपल क्या होता है, फॉर एग्जांपल लाइक ए क्रॉस ए टाइम्स बी इक्वल्स टू ए बी, बोल दीजिए एग्जांपल 2 into 4 you will give you 8. Now here, okay, here there are 3 डाटास इन्वॉल्व, आपके लिए, हमें, हमारे लिए सीखने के लिए इस इक्वेशन पे आपको 3 डाटा मिलेंगे। क्या क्या मिलते हैं? एक 2 है, 4 है, 8 है, दे हैव, ओके, 1 दिस 2 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे ये।
or 8 is a multiple, 8 is a multiple, okay, 8 is a multiple of 2 and 4, राइट. ओके, मैंने ऊपर दिया कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई कीजिए और जो प्रोडक्ट आता है उसको मल्टीपल बोलते हैं, राइट. मल्टीपल ऑफ ए एंड बी. as I have given you below example, 2 into 4 equal 8. अब इस इक्वेशन पे 2 और 4 जो होते हैं फैक्टर्स ऑफ 8 है और 8 जो है 2 एंड 4 की मल्टीपल है. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बेसिक आइडिया वही भी है, पर हम जब सॉल्व करते हैं हमें ये तो बेसिक हाई स्कूल हाई ओके जो हाई स्कूल मैथमेटिक्स रहती है, राइट, कॉन्सेप्चुअल वो रहती है, पर हमारी टारगेट वो नहीं. हमारे टारगेट वी आर एंटरिंग इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई भी किसी भी प्रकार की हो, राइट. ओके, तो उस एग्जाम में कम्पीट करने के लिए तो आपको दो चीज चाहिए होती है. एक स्पीड, राइट, ओके, एक स्पीड चाहिए होती है, दूसरी एक्यूरेसी, दूसरी एक यूनिट स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट, to do that. So for that we need to develop our own techniques. Okay, हमें अपने टेक्निक चाहिए, right. So let's see, will start with a very simple one. Find the LCM of the following 10 and 20. Now look at the board. आप इस ध्यान से देखिएगा. Okay, LCM to find the LCM here, LCM of I have given 10, LCM of 10 and 20. 10 and 20. Okay, yeah. So some of you have answered, right. Okay, some of you answered, that's good. Okay, that's good, very good. The speed matters, but the some of you have answered already and that's good. आप में से किसी ने सबने इस पे इसकी आंसर दी है 20. ओके, दैट्स वेरी नाइस, राइट. ओके, नाउ इस पे देखिए प्राइम फैक्टर. एक तो एलसीएम, आपको एलसीएम दो प्रकार एलसीएम जो निकालते हैं हम लोग, राइट. ओके, यू कैन फाइंड द एलसीएम, राइट, इन टू वेज. एक होती है, राइट, एलसीएम यू कैन फाइंड, राइट. ओके, आप देखिए कि एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट. ओके, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, आप देखिए, it's not about only solving that question. Okay, आप सब सुनिएगा इस बात को. It's not about solving only that question, right. Okay, अब मैंने आपको बोर्ड पे लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन. I wrote the prime factor. It is easy. Those who have हम सब ने हाई स्कूल 11th पढ़ के आए हैं, पर easy to understand. But we need to question what does prime factorization means, right. Okay, prime factorization. Now prime, अब मैथ्स पे जब टर्म्स प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ओके, मैथ्स पे जब मैथ्स पे जब प्राइम नंबर्स बोलते हैं तो नंबर्स, राइट, ओके, हैविंग फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ होते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3, जिसकी फैक्टर्स 1 और खुद होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, राइट. 1 2 3 5 7 11, राइट. ओके, 13 एंड गोस ऑन 17, राइट. ओके, इस तरह जो होती है उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, राइट. ओके, सॉरी. ओके, एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? प्लीज आप लोग कमेंट पे लिखिएगा, ठीक से सुनाई दे रहा है? ओके, नाउ सम ऑफ यू हैव started giving answer, that's good, but let us try to कि उसको देखते हैं कि कैसे क्या. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब टू एक्सप्रेस, ओके, अ गिवन नंबर, एक किसी दिया नंबर को एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल 10 को, नाउ you express 10 in terms of only prime numbers. How will you express? Only दो प्राइम या तीन प्राइम लेके 10 को उसकी मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कीजिए तो कैसे किया? I would like to see how do you do that. हाँ, right. See how you express this. आप प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि ओनली प्राइम नंबर्स लेके किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. नाउ 2 को we can write 2 into 5. 2 को 2 is prime, 5 is prime, right. Now let us see. Abhi you express 20 in terms of prime numbers, right. Okay, so 20 in terms of prime numbers, right. Now you can, how can you write 2? See, 2 into 2 into 5, right. I have expressed 20 only in terms of prime numbers, right. Yes or no, right. So now LCM, now LCM का आप जो you have to take, right. Okay,
you have to take. Now here it's LCM to solve, to find LCM. Now I have expressed in this manner. आपको इस तरह आपने express किया 2 cross 2 cross 5. Yeah, Navya has given the correct answer to express 20 in terms of prime numbers. With it has been expressed into only two numbers. हमने उसको दो ही prime numbers के रूप में express किया है, वो है 2 and 5 को use करके. अब इसकी जो LCM है आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, can I write this as 2 to the power 2 into 5, हम जिसको 2 स्क्वायर बोलते हैं, राइट? ओके, सो हाँ, अभी देखिए एलसीएम अगर व्हेन यू आर डूइंग दिस, ओके, ये मैं आपको बेसिक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बेसिक थिंग, राइट? ओके, सो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन एंड बाकी नंबर्स के साथ जो खेलना पड़ता है, राइट? ओके, एग्जाम्स में तैयारी के समय, ओके, सो तैयारी के जो नंबर्स के समय खेलना पड़ता है, दैट विल आपके ब्रेन को ब्रॉडन करेगा कि हाँ, कि नंबर्स आर अरेंज इन दिस मैनर, और ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट? एक आपकी एक पिक्चर बनती है, राइट? ओके, सो नाउ इसमें देखिए कि अभी जो एलसीएम जो होगी, ओके, टू फाइंड द एलसीएम, राइट? ओके, नाउ आप दोनों में से कॉमन ढूंढने, इसमें 2 और 5 कॉमन है, राइट? ओके, उस कॉमन में से गो फॉर द हाईएस्ट पावर. इन सेकेंड पावर 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, राइट? क्रॉस्ड, ओके, एलसीएम ढूंढे ना, राइट? 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज 5 टू द पावर 1 ही है. तो देन व्हाट हैपेंस? 4 into 5, this comes out to be LCM is 20. लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों के मल्टीपल्स में, अभी देखो दोनों के मल्टीपल्स में 10, 20, 30, 10 का आ गया, 20 का कितना आ रहा है? 20 का 20, 40, 60 आया. अभी इस पे 80 आ जाएगा, इस पे 40 आ जाएगा, राइट? ओके, 50 आ जाएगा, इस पे 60 आ जाएगा. अभी देखिए, तो नाउ लीस्ट सबसे छोटा दोनों में कॉमन. द आइडिया इज ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा दोनों में कॉमन, राइट? सबसे छोटा और दोनों में कॉमन. देखो कॉमन तो आपको क्या क्या मिल जाएंगे इस पे? यू गॉट 40 also common, right? Later on you will get here that's 100, you'll get 100 also common, but the smallest part, that is the where we have this 20, right? So इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बट दिस इज जस्ट आपको to have that clear idea. But the faster method, उसको कैसे करना है? You need to arrange that 10 and 20 like this. 10 and 20 को आप ऐसा अरेंज कीजिए. This is called division method, okay? And start choosing prime numbers. देखिए आपको, okay, आज की इस क्लास में एलसीएम से जब डील कर रहे हैं तो आई वांट यू टू ब्रश अप. आप घर पे जब तैयारी कर रहे थे, बैठ रहे होते हैं, तो देन यू नीड टू ब्रश अप प्राइम नंबर्स, ओके? नंबर्स को प्राइम नंबर्स क्या होती है, एटलीस्ट ब्रश अप. इवन नंबर्स क्या होती है, एटलीस्ट ब्रश अप. इफ यू डू नॉट नो, इफ यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, आई विल मेक special classes for those, okay, just for 10 or 20 minutes, 30 minutes, okay, right? हम उसके लिए आपके लिए वो क्लास लेके आएंगे, okay? Don't worry, if you have problems you can come pass me a comment, okay? So तो देखिए आपकी कमेंट्स. So now अभी देखिए when you have to solve, आप इसको ऐसा सॉल्व करेंगे तो ओके, दिस इज कॉल्ड डिवीजन. प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने किया, तो आपको कौन सा जल्दी आपके दिमाग में बैठता है वो यूज करना है, ओके? बस, ओके. सो नाउ यू नीड टू स्टार्ट प्राइम नंबर. यू स्टार्ट 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17. ओके, आई हैव गिवन यू फर्स्ट 20 के अंदर में जो प्राइम नंबर्स है. आई थिंक इफ आई मिस्ड एनीथिंग यू राइट इन अ कमेंट, ओके? Okay, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, right? Okay, yeah. So now अब इनमें से you need to test. यहाँ तो डायरेक्ट दिख जा रहा है आपको, right? 2 से कैसे? 2 टाइम 5, right? Sorry, 10, 20, okay? तो 2 टाइम 5, 2 टाइम 10. Now when you test 20 and 2 को डिवाइड करने की कोशिश किया, तुरंत आपको बता जाएगा 2 से 10 को 2 can divide 10, 2 can divide 5, right? That is a common factor, yes, right? So now again अभी नीचे वाला देखिए. Now again you draw division sign. Again you see, you cannot do, आप 2 को 10 से कर 10 को 2 से डिवाइड कर सकते, but 5 cannot. But you need to go for other 2, 3, 5, 11. See now among this
You can 5 can divide both, right? 5 times 1, 5 times 2. So द मोमेंट जब भी आपका यहाँ पे इस कॉलम पे दोनों प्राइम नंबर आ जाए, ओके राइट, ओके, व्हेनेवर हियर यू गॉट द प्राइम नंबर्स, मैं प्राइम नंबर्स आई एम राइटिंग pn, ओके, प्राइम नंबर्स, एट दैट मोमेंट आप उस समय आपको उस प्राइम फैक्टराइजेशन को इस मेथड से आपको कंक्लूड करना चाहिए, राइट, ओके, यू नीड टू कंक्लूड. देन व्हाट विल बी द एलसीएम? नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम? हियर आल्सो यू विल फाइंड द सेम आंसर, यस और नो, राइट? एलसीएम ऑफ 10, LCM of 10 and 20 equals to, अभी इस मेथड में तो when you are doing a division method like this, you take all these prime numbers, okay, you take all these prime, इन सभी prime numbers को collect कीजिए and LCM में 2 cross 5 into 2. How much you get here LCM? Same. 2 2s are 4, 4 5s are 4 5s are 20. So here also you got answer as, आपको यहाँ पे भी आंसर 20 मिला, राइट? ओके, कैन यू प्लीज स्पीक? ओके, सो सिमंत दत्त जी, राइट, ओके, ओके, आई विल ट्राई दैट पार्ट, बट अभी के लिए थोड़ा लेट मी फिनिश दिस क्लास, ओके, नेक्स्ट वन, राइट, ओके, राइट, ओके, बट यू कैन, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप उसे आसान भाषा में ऐसे पूछिए, ओके, बी ओपन टू आस्क क्वेश्चंस, राइट, ओके. इफ इट इज लाइक इफ यू आर, अगर सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रही है तो आई विल रिपीट इट फॉर यू एंड प्लीज यू डू ask your, raise your hands or ask questions, okay, right? I'm आपकी chats, okay, I can see your chat, okay, and just excuse me for a second, okay. Okay, thank you. So I can see good evening baby, right, okay, Sasanka, right, okay, Sasanka ji, good evening, okay. So hope you find the class interesting and we'll proceed to next questions. So I am, okay, and in the similar manner, okay, उसी तरह, okay, अगर आप सब बोले, अगर मेरी जो भाषा है इंग्लिश हिंदी, मैं इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाऊंगा अधिक, पर आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं होम या में पूछ सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना, ओके. बाद में कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देना है तो वो भी आई विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो, ओके, राइट. पर आई हैव गिवन, अभी यहाँ पे आप सब देखिए, मैंने 20, हाँ, I have given you 20, 50 and 150. This I am leaving for you, guys. I am giving, okay, let's see, one minute, okay. आप सबको 1 मिनट की टाइम देता हूँ and let's see, okay, I have not put the time in the board. I would like to see here, okay, I will give you 1 minute. So whether how much, what is the LCM for these three numbers, these common multiples, okay, right? यहाँ पे इन तीन नंबर्स की 20, 50, 150 का आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ओके. 1 मिनट में आप लोग इसकी एलसीएम निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिए. हेलो डेविड दास, हेलो, या, हाँ, actually I'm from this, okay, from the state of Manipur, okay, right. Now see, I want you guys to solve this, okay. Let us start. 1 minute, okay, I'm waiting. Start. $300, okay. David Star has given the answer 300. Yeah, I will not say whether 300 or yes. Navya, okay, Navya, David does, okay, fast enough. Navya has also answered. I will not reveal the answer what they have answered. It, okay, some of you must have seen, but let's see what is the correct answer, right, okay. कौन correct है कि नहीं देखते हैं, right, okay, आराम से, right, okay. So others, what happened? You still have 20 seconds. Okay. Yes. Okay. So that's it. Time's up. Okay. Now अभी देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में तो आई हैव गिवन यू वेरी सिंपल नंबर सो दैट आपको यू नो टू ब्रेक डाउन द आइडिया ऑफ दैट
एलसीएम की आइडिया को ब्रेक डाउन, दिमाग में बैठ जाए वो, एक बार बैठ गया तो आपको कोई भी नंबर आ जाए, आपको यू नॉट फेस प्रॉब्लम। ओके, सो इन बिटवीन, इसी बीच में मैं आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। ओके, शायद आप किसी भी लेवल की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, राइट, कुछ चीजें जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स पे, राइट। ओके, किसी भी मैच करो, आपको एक तो जो टाइम्स टेबल्स होती है, यानी कि टाइम्स टेबल्स होती है, टाइम्स टेबल, ओके, एटलीस्ट 1 से लेकर 25 तक की तो आपको पूरी आनी चाहिए। ओके, अभी इसको कैसे याद करना है, सब लोग अपनी अपनी टेक्निक बनाते हैं। अगर once you can, if you want to help me with that technique also, I will do it for you, not I will not do, but पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए। ओके, राइट। ओके, मेरी टेक्निक आपके लिए काम कर सकती है, नहीं कर सकती है, पर कोई भी चीज खुद के लिए डिजाइन करते हैं, इट विल वर्क फॉर यू। ओके, काम करती है, राइट। ओके, सो टाइम्स टेबल एंड प्लस माइनस को एटलीस्ट प्रैक्टिस करना। ओके, राइट। ओके, नाउ so what is the answer? The answer is 300. LCM equals to 300. Okay, LCM जो होगी 300, and in next class I will be अभी नव्या ने सही आंसर दी थी, डेविस दा आपने भी सही आंसर दिया, बेबी ससन दा आपने भी सही आंसर दी है, और बाकी जो इसमें आ रहे हैं, जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू सी हाउ सीरियस यू आर। ओके, आप लोग कितना, मतलब आपकी जो सीरियसनेस है, मतलब फोकस है, उसको देख के मेरे को इंस्पायर करेगा, मेरे को मोटिवेट करेगा, आई विल डू बेटर, आई कम विथ मोर टारगेटेड क्वेश्चंस, राइट। ओके, राइट, आपको देख के मैं मोटिवेट हो सकूं, ऐसा आपकी भी प्रयास हो, राइट, आपकी ओर से भी, राइट, आप सब जो अभी लाइव सुन रहे हैं मेरे को, राइट। ओके, राइट, सो I promise you one thing, okay, it's not only beyond teaching. Okay, I'm not here only as a teacher. The anything that is necessary for you to get success in whatever exam you are preparing. Okay, right, but as a I can say brotherly figure. Okay, right, not only as a teacher. Okay, एक टीचर के रूप से सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, जो लगेगा I will do for that, but I need a focus from your end. Okay, so I am leaving this for you for next so that you try at home, and we'll move to next question. Okay, now see, now here. Okay, अब इस क्वेश्चन पे आए, इस तरह की क्वेश्चंस जो होती है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आजकल, आप जो एग्जाम कोई भी तैयारी करे होगे, मोस्ट ऑफ द एग्जाम विल हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, यू विल हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन, सबको दिखाई दे रहे होगा। The product of two numbers is 216. If the HCF is 6, then their LCM is okay. Now क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, समझ लिया, कोई दो नंबर है, लेट्स से A and B है। ओके, A and B दो नंबर है, हाँ, A and B दो नंबर है, और उनकी जो प्रोडक्ट टू नंबर इज 2, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आंसर जो प्रोडक्ट जो होती है 216। ओके, ओके, 216 होती है, राइट। A and B जब मल्टीप्लाई करते हैं 216 होती है। दूसरा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इफ द HCF इज 6, अगर A and B का HCF जो होती है, HCF equals 6, right, then the LCM is, the question is हमें क्या ढूंढना है उसकी, we need to find the LCM, right। अब इसके लिए देखिए, ये हम लोग ओके, सुस्मिता दे 36। Okay, now there is, I have given you 4 options, right? Okay, right, some of you have answered, and that very nice. Okay, that is very nice. Okay, and I will मैं देखता how did you proceed, आपने उसको कैसे proceed किया, right? Okay, that's very nice. Okay, now let's see। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को, मेरे को कोई क्वेश्चन तो इतना प्रैक्टिस करते हैं हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेशंस में घर पे, कि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद ही हो जाती है, वही उसको बाहर ही हो जाते हैं अपने को, राइट। ओके, वी गॉट वही मेमोरी पे बैठ जाएगी, या कोई टेक्निक तो है, ये तो 2 स्टेप्स में खत्म हो जाएगी, ऐसा इसका आंसर यही आएगा। पर मोस्ट इंपोर्टेंट उसकी प्रोसेस जो है, हम हमारी दिमाग में बैठी है क्या। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको तुरंत बैक ऑफ द माइंड में क्या रहना चाहिए, आपको दिमाग में क्या रहनी चाहिए, यू नीड अ फॉर्मूला, राइट, यस और नो, राइट। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसको सॉल्व करने के लिए 1, देखिए मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, एक दो होता है नॉर्मली हमें हाई स्कूल टाइप स्कूलिंग, नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, राइट। ओके, तो हाई स्कूल टाइप पढ़ना, राइट। ओके, पर दूसरी होती है
कि वी आर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए तैयारी चल रही है, उसके लिए मैंने 2 बार ऑलरेडी मेंशन की थी आपके स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट? ओके, सो लेट अस गो बैक टू दैट प्रीवियस स्लाइड। ओके, आप देखिए मैंने आपको फॉर्मूला की जो स्लाइड थी, हैव अ लुक हियर नाउ। हमें एट द बिगिनिंग फर्स्ट तो मैंने फॉर्मूला आपको आज आज की जो क्लासेस में जो यूज करने वाले हैं, आपको मैंने एक फॉर्मूलास की चार्ट दी थी, राइट? ओके, यू सी द फर्स्ट फॉर्मूला सेज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ HCM LCM। नाउ यू मूव फॉरवर्ड, आप हम जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उस क्वेश्चन को देखो, राइट? ओके, नाउ लुक एट दैट क्वेश्चन। आप अभी इस क्वेश्चन को देखिए। नाउ फॉर्मूला जो है प्रोडक्ट ऑफ क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF, yes or no, right? Okay, so the product of two numbers is 16. If the HCF is 6, then their LCM is okay, right? Okay, so then so how will you proceed? इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? ओके, राइट? ओके, देन इन सॉल्यूशन पार्ट somebody has got answer already very fast, and that's very nice. Okay, right? Okay, if we have the speed, that's very nice. Okay, now अभी टेक्निकली तो हमको इसको देख के बोल सकते हो कि जो आंसर दिया है वो सही है, राइट? ओके, पर अप्रोच कैसे करें, दिमाग में कैसे बैठाएंगे, राइट? ओके, राइट? सो नाउ लेट्स से इसकी जो सॉल्यूशन है, ओके, राइट? देखिए, आई एम नॉट रशिंग, ओके, हम कहीं भाग नहीं रहे, हम कुछ सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे विल हैव या समबडी हैज गिवन, सुष्मिता दे हैज गिवन द आंसर कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू LCM टाइम्स HCF। दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला आई हैव गिवन यू, राइट? नाउ हियर यू प्रिज्यूम, ओके, हमें HCF 6 दिया है, सो लेट अस से लेट 6x and 6y, we are presuming x and y any number, okay, any number, okay, ठीक है ना? Any number, then now x and 6, let 6 be the two numbers, okay? हम ये मानते हैं कि 6x and 6 कहां से हमने HCF ली, दूसरी दो है we are taking any random numbers which will be co-primes, okay, right? Yeah, so अभी हमने दो नंबर we have taken in such a way that these two are the numbers। अभी क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट कीजिए, नाउ रिफ्लेक्ट द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट कीजिए, राइट? ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 216, राइट? ओके, यस और नो? व्हाट इज सेइंग? दैट मींस व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू, when you multiply 6x into 6y, okay, 6x into 6y, आसान सी बात है। अभी कोई भी ऐसी क्वेश्चन आती है, अगर सोचो यही क्वेश्चन को LCM इसमें LCM देखकर HCF ढूंढने को बोला, मैं आपको LCM जो निकालने वाला हूं अभी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकालने वाला, उसको अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल देके HCF ढूंढने बोलता तो हाउ विल यू प्रोसीड? ओके, नाउ this way you have to play, so now you multiply these two, okay, 2 1 6 according to question के हिसाब से, okay, question according to question ATQ, I'm writing a dot according to question, okay, according to question 6x and 6y equals 216, right? ये question की given है। now HCF 6, then LCM कितना होगा? पर हम फॉर्मूला पे जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equals to the product of LCM and HCF, okay? तो अभी देखिए, I think here आपको you can say this one as 36x y equals to 216, right? 36x y equals to 216, right? Okay, now how much you get? xy की वैल्यू कितनी आई? 216 by how much you get? How much you get? Now this is 36, right? Then I think when you divide this, आप इसको आंसर बोलिए तो आप सब pass the comment, you can type it in the comment answer, what is the value
when you divide 216, I think you can see the color now while I'm changing the pen color. आप सबको दिखाई दे रहा है ना, right? Okay, so देखिए जब मैं कलर सॉरी आप इसके आंसर के हाउ मच इज द व्हाट इज द वैल्यू जब 216 डिवाइडेड बाय 36, व्हाट इज द वैल्यू, एनीवन, व्हाट इज द वैल्यू? So the it is, we have, you'll get 6 more, right? You'll have 6 as the answer, right? See, if you can check, whether I'm wrong or right. Okay, that correct or not, right? Okay, 6 into 6, 36, right? 6 is 18 plus 3, 21. So that's correct, right? Yes or no, right? 36 is the answer. Now, so how you will obtain? आप LCM को कैसे obtain करेंगे, right? Okay, then your LCM will be LCM will be 6 cross x y. Okay, then you have this equals 6 into here you have 6, right? Okay, so 6 into 6, then 36. That is the LCM. The value of LCM here is, it is 36. जो LCM की वैल्यू है, it is 30 and 6. Okay, LCM की वैल्यू है 36. Given 216 है, HCF 6 है, उसकी LCM की वैल्यू जो है, it is 36. Any questions? Okay, I'm reading your comments. Hello, Ritu Porna ji, right? Okay. Hello, Ritu ji. Good evening. I welcome you in this, class. Okay, and okay. So, any questions? आपको आप सब अपने कमेंट पे लिख सकते हैं, ठीक है, राइट? एनी क्वेश्चंस? Okay then. So I'm moving on to next questions. Okay, right? I'm moving on to next question, right? Okay, then let us move to next question. If you want, you can note it down. If you are okay, if you want, you can note it down, or you can I will provide you the PDF form in later sessions. Okay, right? Okay, right? Any questions? कोई question है? नहीं, आपको प्लीज आप लोग बोलिए, हाँ, अगर इफ यू आर अनेबल टू गेट व्हाट आई एम स्पीकिंग, मैं जो बोल रहा हूँ और और भाषा में अगर ऑडियो मेरी जो साउंड है आपके पास, वॉइस जो है क्लियर नहीं है, कट हो रही है या समझ में नहीं आ रही है, तो आपको बोलना है, राइट? ओके, वी आर हियर टू लर्न. ओके, हम सीखने के लिए आए हैं, राइट? कितना कितना क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, दैट डजंट मैटर. आप अगर 1000 लोग को इस पे, और 1000 लोग में से एटलीस्ट 900 बोलते हैं, बी पॉजिटिव, राइट? 900 लोग को पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ आ गए, पहले जाना भी होगा, स्टिल रिवीजन हो सकती है, राइट? ओके, सो विल बी स्लो. देन आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, राइट? ओके, आई थिंक या नाउ. Okay, now the second formula, I will read out the question for you at first. Okay, now find the LCM of 1 by 2, 5 by 8 and 3 by 4. This type of questions, okay, this type of questions I have ये जो प्रकार की जो क्वेश्चंस है, आई हैव स्टेट गवर्नमेंट के जो असम स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स है, ओके, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आई फाउंड कि दिस टाइप क्वेश्चंस आर वेरी फ्रीक्वेंट. ओके, एलसीएम जो फ्रैक्शन निकालने का है उसके पूछा जा रहा है, राइट? ओके, सो पूछा जा रहा है तो क्या करना है, बाय हार्ट करना है क्या? नो. मैथ्स आप क्वांट्स और रीजनिंग को बाय हार्ट करने लग गए तो देन how much that mean we are just next to supercomputer, right? So we are not by heart that. What we need to by heart, what we need to keep in mind is the formula को by heart करना है. क्या 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 हमें क्या याद रखनी है? हमें फॉर्मूला को याद करनी है, राइट? ओके, राइट? हाँ, हमें फॉर्मूला को we need to दिमाग में फॉर्मूला को याद रखनी है. तो फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शंस?
what is the formula to find the LCM of the fractions? Fractions की LCM ढूंढने के लिए formula क्या होती है, right? Okay, what is the formula क्या होती है? It is now it is LCM, right? Okay, right, what is what is the now उसको जो formula है, right? Okay, I'm इस पे देखिए formula क्या होती है? Since I have to erase, I would like to take you that question number 3, right? Okay, I like to that first slide पे, right? Okay, now you see board पे what is the formula to find the what is the formula to find the LCM of fractions? So you like please look at this board. आप इस board पे देखिए, इस क्वेश्चन पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये याद है कि नहीं, ये पार्ट जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपका बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये आपको ये याद है कि नहीं, एंड ओके राइट। क्वेश्चन तो हमने रोज दिख रहे होते हैं, मिस पपोरी, राइट? ओके, या 6 फॉर दैट आई थिंक, या सो जो अभी जो LCM, हमें LCM ऑफ फ्रैक्शंस ढूंढना है, राइट? हमें जो वेयर व्हेन यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ फ्रैक्शंस, क्वेश्चंस तो हमें सुना है, पता भी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे दिमाग में ये बात अपने को बैठी है कि नहीं, राइट? ये दिमाग में बैठा है कि नहीं अपने दिमाग में, राइट? ओके, थैंक यू राहुल जी, राइट? ओके, राहुल जी, राइट? ओके, हाँ, ये बात ये जो फॉर्मूला है हमारे दिमाग में बैठी है कि दस इज दिस इन आवर मेमोरी और नॉट? सो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि जब हम तैयारी करते हो, राइट? ओके, आई आल्सो वेंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ preparation to certain exams, right? Okay, right, so that's, I'm not dealing with that it matter, but for that I'm sharing one thing कि whenever you start, जब भी आप पढ़ते हैं, टेबल चेयर में बैठते हैं, तो साइड पे फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके लिए आज एक एग्जाम्पल के रूप में भी सोच सकते हो, आपको पढ़ाने के लिए भी, राइट? ओके, राइट, आपको पढ़ाने के लिए भी मैंने ऐसी एक तैयारी करके लाई कि दिमाग पे आपकी बैठ जाए, राइट? ओके, नाउ LCM of fractions equal to LCM of numerators by HCF of denominators. Okay, इसमें थोड़ी एडिटिंग में आई थिंक हेयर बोर्ड प्रॉब्लम केम, ओके, एनीवे नेट का प्रॉब्लम है, राइट? एनीवे हम वो इम्पोर्टेंट नहीं, हम व्हाट वी लर्न इज इम्पोर्टेंट, राइट? ओके, इट इज नॉट व्हाट वी लर्न इज, हम जो क्या सीखते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? नाउ ओके, आप हाँ, we have come to the question, right? अब इस क्वेश्चंस पे देखिए, राइट? ओके, इस क्वेश्चंस पे देखिए कि अभी हमें LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, ओके, राइट? LCM ऑफ फ्रैक्शन, we need to find the LCM of fraction, okay? अब जो LCM of fraction है, इस पे देखिए कि what was the formula? Formula was LCM of, formula क्या है? I'm writing formula क्या है? LCM of numerator, LCM of numerator, LCM of numerator, LCM of numerator by HCF of denominator. क्या होती है HCF of denominator? ये जो फॉर्मूला है, you don't have to write, I have given you the first this, okay, first उस पे दिया था board side पर, right? Okay, so LCM of numerator by HCF of denominator. अभी यहाँ पे भी हमने just now LCM कैसे ढूंढना है हमने सीखा था। Now let us start the solution. इसके आप सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं, राइट? ओके, सॉल्यूशन 1, ये मैं आप एक डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन लिखना, फिर नंबर को रिपीट करना, फिर उसको आपके सामने कैसे करते रखना, क्योंकि ये मान के हम चल रहे कि हर दिन कुछ हम राहुल ओके, राहुल गुड इवनिंग, राइट? ओके, ओके, राइट? ओके, नाउ ओके, लिसन, okay, where was I? Yeah, now क्योंकि ये डिटेल कर रहा हूँ, क्योंकि we need to learn something that it seems कि हमें रोज लगे कि this is new, right? Okay, so now here 1/2 LCM किसका ढूंढना है? 5/8, okay, 1/2 5/8, हाँ, 5/8 3/4, हमें फॉर्मूला क्या बोलती है? LCM of numerator by HCF of denominator. So now I'm writing it for you, okay? You can do it mentally भी कर सकते हैं इसको। LCM of
न्यूमरेटर को हम यहाँ पे कैपिटल एन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? ओके, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1 5 3। न्यूमरेटर मतलब किसी भी फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन a बाई बी, कोई भी फ्रैक्शन a बाई बी जो होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं? लाइन का ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, लाइन का नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होती है? लाइन का ऊपर वाला न्यूमरेटर, लाइन का नीचे वाला डिनोमिनेटर। इंग्लिश में लाइन का नीचे वाला डिनोमिनेटर, लाइन का ऊपर वाला न्यूमरेटर। ओके, दैट्स सिंपल। अभी इन अपने जो क्वेश्चंस है, अपनी जो क्वेश्चंस है, राइट? ओके, इन फ्रैक्शंस पे आप देखिए, अभी इन, नाउ लुक इट हियर, आप इन पे देखिए, राइट? ओके, तो इन पे न्यूमरेटर्स के है, एक 1 है, 5 है, 3 वी हैव टेकन हियर। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली द न्यूमरेटर पार्ट। ये न्यूमरेटर पार्ट की खासियत क्या है? एनीवन? Somebody has given the answer, that's very nice, but I want you to tell what this is in तीनों नंबर की खासियत क्या है? There are special numbers in number system, special number है, बोलो। हमने शायद at the beginning of the class I mentioned, anyone in the comment section? I like to know. 1 5 3, what are these numbers? Okay, for your hint, what type of these numbers are? कौन से टाइप के नंबर है ये? Anyone? Yeah, I mean prime numbers. Okay, right, prime numbers, right? Okay, yeah, somebody. Here I can see entertainment 1.5 million views. I would like to request all of you to use your very beautiful names, right? Original names, right? Okay, right? Okay, so that I can interact one-on-one with you. How can somebody expect with who knows if that is a robot? Anyway, that's very nice, Ajay. Anyway, we have, these are prime numbers. So do we need to find LCM for the prime numbers? Because we need to find LCM, right? हमें LCM ढूंढना जरूरी है? No, right? Okay, we don't need to find LCM. What do we do then? आप क्या करोगे? Then we just cross multiply it. Yes or no, right? Oh, sorry, we just multiply it. How? What is the LCM? So 1 5 5 3. The product is 15. Okay, the product is the very 15. Now here it is HCF of denominator, right? HCF of denominator. Now HCF of, I'm representing denominator by D, right? Okay. Now HCF, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट, मैं ये मान रहा हूं कि आप सब में कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत एचसीएफ की दो तरीके की जो हम सीखते हैं कि डिवीजन मेथड है। एचसीएफ किस किस की ढूंढनी है? 2 8 एंड द अदर वन वाज 3 by 4। नाउ कैन यू से, आप इसमें तो शायद बाय डायरेक्टली इस पे 2 8 4 को देखते ही बोल सकते हैं। एनीवन हु कैन एनीवन विद, आप लोग कमेंट्स पे पास कर सकते हैं कि 2 4 8 की एचसीएफ क्या होगी? एचसीएफ क्या होगी 2 4 8 की? somebody has answered. Yeah, somebody has answered. Thank you. And I think it's almost 2. And okay, we like to see that. Okay, somebody has answered 2, right? Okay, now 2 है कि नहीं? How do you come to that? Okay, highest common factor HCF 2, and we have entertainment, Susmita Day, and we have all of you have given a very correct answer, and congratulations, right? Okay, that for that, right? But how did you arrive at? एक बार revision कर लेते, right? Okay, we have something called, I'm using the board here. Okay, I'm using the board here with the green part. We have HCF for division method. कौन सी method है? I'm just telling you for this revision method, for your revision भी नहीं, I like to use the word recall, just कि आपके पास already revised भी है, उस रिवाइज किया हुआ चीज को आप फिर रिकॉल कर रहे हो, राइट? उस रिवाइज किया हुआ चीज को you want to recall it, that's why I'm writing. So let's say 2 8 4, right? Now you need to find the HCF. Now you proceed. First you pick to any numbers, you find the by division method HCF of the two numbers. How do you find that? Let me put 8 here. You start with 2.
अभी इसको डिवीजन मेथड से हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, डिवाइड कीजिए 2 टाइम 4 you have 8, right? Now what is the problem? Yeah. You take 4. Okay, now again the HCF between 2 and 4 is 2, right? Once the remainder is 0, the HCF between 2 and 4 is 0. Once the remainder is 0, the last divisor, ये जो divisor है, ये जो divisor है 2 and 4 का HCF है. अब ये जो HCF मिला अपने को, ये और 8 के बीच में इस डिवाइजर को, रिमेनिंग नंबर को डिवाइड करना है. 4 you have 8, you got 0. So आपकी HCF क्या है? HCF of denominator 2, 4 and 8. 2, 4 and 8 का क्या होगा? Equals 2, 4 and 8 का HCF is 2. कितना मिला? Let me see how many of you. Okay, most of you gave the correct answer and that's 2. देखिए, this is a gameplay. आपने कोई कोई नंबर्स तो देखते ही आप बता सकते हो कि ये आंसर इसकी क्वेश्चंस की होगी. ये कहां से आती है? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मतलब क्या? प्रैक्टिस इट इज नॉट ओनली बताओ. आप जब पेन एंड पेपर मोड पे लिखते हैं, कुछ कुछ चीजें फिंगर टिप्स पे रहती है ना. मैच इज इन बोलते हैं, मैच इज नॉट ओनली इन द माइंड, इज फिंगर टिप ना. आप किसी किसी को देखोगे तो सेम क्वेश्चन को भी इतना फास्ट करते हैं, ऐसा लगता है बाहर करके आया बंदा, रट्टा मार के आया है, राइट? ओके, हम लोग मैथ्स को जितना हो सके उतना रट्टा नहीं मारेंगे, फुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ विल प्रोसीड स्लोली. ओके, राइट? ओके, राइट? ओके, हाँ. सो नाउ आपने HCF को 2 बोला था, बट फॉर्मूला क्या है? LCM ऑफ. तो फिर तो नाउ लेट अस कम टू दैट पॉइंट. फिर तो LCM ऑफ आंसर क्या आएगा बताइए? एनीवन? LCM ऑफ 1/2, 5/8 and 3/4. इसकी LCM कितनी आएगी? What will be the LCM? उन्होंने बताया यहाँ पे फॉर्मूला पे LCM of numerator we have got 15. I am marking this here. And HCF of denominator we have got 2 here. So by that it's a fraction itself. We have a fraction 15/2. Right? Yes or no? Right? 15/2. We got a fraction 15/2. Right? Okay. So then अभी इस क्वेश्चंस में आप सभी स्टूडेंट्स, राइट? अभी सब स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स सब अभी सभी ने सभी राइट आंसर दिए हैं. एंड राइट आंसर जब दिया तो पर मेरा आप सबसे यू नो कि चैलेंज, आई कैन से दिस, चैलेंज ये है कि क्या आपको ये इनिशियली पता था? Yes, good, no, good. Okay, there is no problem. We are learning. Now, second, ये most important part है, so that to proceed this question. बाकी second most numbers के साथ खेलना in the sense कि multiplication, addition, division जो है. So okay, so then we'll see. Okay, I'm answering to, okay, here somebody is saying hard questions. Okay, see, I have told you in the beginning, we'll be proceeding step by step. I know few of us are born intelligent, talent, right? Okay, and few of us are average. So I'm not providing this class to all those sub 99%, 98% वाले सिर्फ provide नहीं कर रहा हूँ. I'm providing classes to everyone who are also average, who are 90% holders, 80% holders, who may be class toppers, for each and every one of you, right? Okay, each and every one. So we'll go slow. हम step by step जाएंगे. I have mentioned this in the beginning also, and since we are starting with a topic, we have dealt such questions today. Tomorrow we'll use a different set of questions based on different formulas that you may see आपको लगता है हाँ, this is more relevant for exam, right? Okay, classes are so only like this, right? Okay, classes ऐसे ही होती है, धीरे धीरे आप धीरे धीरे जाते हैं, difficulty बढ़ाते जाते हैं, right? Okay, right? Okay, we don't हम पेड़ के ऊपर से नहीं चढ़ते, नीचे से चढ़ते हैं. I think that's very enough. I answered you, right? Okay, now उसके बाद let us hope any questions over these questions. Any questions? Okay, 37.2. Okay, so
हाँ, there somebody is giving 7.2 and that's like you can divide 15 by 2 and you get a answer 7.2 or 5. हाँ. Okay, anyway, if you divide 15 by 2 you get answer, right? Yes or no, right? Okay, in the decimal form that you can do. Or in the whole structure, any question in the whole process, any questions, आपको कुछ questions पूछने? Okay, we can pass comments. Okay, आप comments पे पूछ सकते हो, right? Yes, any questions? So everyone is okay with the explanation. मोस्ट इम्पोर्टेंट है बस आप सब जो भी अभी लाइव क्लास करने को क्लास करें, ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है. ओके, ये सॉरी, ये जो है आपको ये बाहर करना है. बाकी ये सब मल्टीप्लिकेशन एडिशन विल कम व्हेन यू प्रैक्टिस एट होम, राइट? ओके, राइट. ओके, देन we proceed to next questions. Okay, हम दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं, राइट? ओके, okay. Now here another type of questions, right? Okay, which is also मैंने जो 3 formulas दिए हैं शुरुआत पे, it will be wholly based on that. Yes, somebody gave 7.5 answer for the previous answers. You can cross check each other in comments, okay, right? But in a very most polite way, right? Okay, in a most polite way. आंसर अगर कमेंट्स पे किसी का गलत भी है तो एक बोलने के तरीके होती है, राइट? ओके, राइट. हाँ, तो जो 3 फॉर्मूला शुरुआत में मैंने दी थी, एलसीएम और एचसीएफ की रिलेटेड, एचसीएफ रिलेटेड, एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड वी आर डीलिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, जो उसके तरह के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर डीलिंग, सो दैट हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो इट हेल्प अस टू आंसर दैट. ओके, somebody is so अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो, राइट? ओके, द एलसीएम ऑफ two numbers is 864 and the HCF is 144. If one of the number is 288, the other number is, there are 4 options I have given, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. Okay, anyway, for this let's see how many of you have अपनी कॉन्सेप्ट्स को कितने क्लियर है, एक बार देखते हैं. लेट अस ट्राई. ओके, आई एम गिविंग 1 मिनट, राइट? ओके, आपको फिर इस पे भी 1 मिनट देता हूं. दोस्त हु आर वाचिंग दिस, 1 मिनट. ओके, 1 minute. Okay, so let's start. Let's try to solve. Let's see. Since this is my first class, I would like to see what is the conceptual level, right? Okay. Okay, 10 seconds. Did anyone answer or not? Okay, so anyway, thank you. Few of you, I think there may be net issues, so answers may not be sent. Okay, but we'll start with the answer. Okay, now we'll directly go by the formula without much this. Okay, now the question is that the LCM of two numbers is, we'll start here. Okay, now आप इस पे देखिए, the LCM of, okay, LCM कितना दिया हुआ है आपको? How much is the LCM given है? LCM कितना दिया? LCM of two numbers is 864. LCM of two numbers is 864. Okay, and their HCF is 144. HCF equals 144. उसके बाद if one of the number,
नाउ हियर LCM कितना दिया हुआ है? What is the LCM? LCM, what is the LCM? That's given 864. 864 LCM दी हुई है. HCF कितनी दी हुई है? HCF is given as 144, and between two numbers A and B, दो numbers होते हैं, right? A and B, and we were presuming that A is given as 288. Now anyone in the class, okay, anyone in the class, which formula among the three formulas I have given you at the beginning will be used in these questions? आप लोग बोल सकते हो कि मैंने जो शुरुआत में 3 फॉर्मूला दिया है आपको, उन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे? हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? एनीवन? ओके, सो व्हिच, आप कौन सा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला मैंने शुरुआत पे दिया आपको, यू नो, एस रिकॉल लेके, उनमें से कौन सा? ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, ऐसा नहीं कि आपको रिवाइज नहीं किया है, बट दैट रिवीजन को ही रिकॉल करने के लिए मैंने आपको वहां पे दिया था, राइट? सो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आप कौन सा, व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई? हाँ, आई थिंक वी हैव समथिंग, राइट? C, 342. 342. What is the answer? Okay, somebody has given an answer. Okay, we'll check that. We'll cross verify. हम यहाँ solve करके cross verify करेंगे. And good, if that is a good speed. But okay, now पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, कमेंट पे क्या बोलना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला, 3 में वो 3 फॉर्मूले, C. Okay, so आप 3 फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको ये बताया था, राइट? Yes or no, right? Anyway, पर we'll proceed, and हमने उस पे एक दिखा दिया प्रोडक्ट ऑफ, हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो थर्ड फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू, इसमें एनी टू नंबर्स बस शॉर्टन में, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF. अब इसके सॉल्यूशंस पे यू वॉच दैट, इसके सॉल्यूशंस पे आप देखो हमें क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है. देख, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग्स, ओके? आई एम राइटिंग ऑल दिस थिंग्स वर्डिंग बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ओके? जब आप प्रैक्टिस भी करते हो, यू नीड टू फॉलो दिस. क्वेश्चंस पे दिए गए डाटा को एटलीस्ट साइड के कॉर्नर, पेपर के कॉर्नर में लाइन खींच के कैसा आपका प्रैक्टिस करने की आदत है, एटलीस्ट क्वेश्चंस के डाटा को निकालना आना चाहिए. धीरे 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 दैट आप जब 100, 200, 3000, 4000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, देन एट द मोमेंट यू डोंट नीड टू राइट दैट. वंस यू रीड द क्वेश्चन, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट, ओके? आपको समझ आ जाएगी. पर फॉर नाउ ना, गिवन हमें तो LCM दिया गया है, LCM इज ऑलरेडी गिवन, LCM इक्वल्स टू 864, राइट? HCF भी दिया गया है, HCF is also, it is 144. HCF भी दिया गया, right? Okay, then out of the two numbers, product of two numbers, okay, out of the two numbers, two numbers दिया गया था, उसमें से एक नंबर, let's say I'm presuming A का वैल्यू 280 दिया गया है, और हमें ढूंढना है the other number is, other number कौन सा है, okay, right? Okay, then other number, let's say the other number, हम इसको B से रिप्लेस करें, B, इस पे क्वेश्चन, हमें दो अदर नंबर को निकालना है, राइट? वी नीड टू फाइंड द अदर नंबर. सो हमें आउट ऑफ द थ्री थिंग्स हमें दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ HCF, LCM मिल गया, दो नंबर्स पे एक मिल गया, तो हमें आसान है. लेट अस पुट इनटू दैट डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट? ओके, हम फॉर्मूला पे लेट अस जस्ट पुट इनटू फॉर्मूला, राइट? ओके, आप इस साइड पे देखिए, यू लुक here, okay? Now let us put that into formula, okay? I think I am providing the answer here, okay? You have, आप इस पे देखिए कि product of two numbers, okay, we are presuming A into B, product of two numbers equals to, किससे इक्वल होता है? LCM कितना है अपना? What is the LCM? Okay, I want you to participate in the class, okay? हम देखो, we are in a virtual platform and we have opportunity enough to, you know, क्या आप, we can interact in this medium. आप कमेंट पास करना, क्वेश्चन पता नहीं तो पूछना, राइट? ओके, पता है भी तो अगर बाकी का वेट करना, कंपेयर करना खुद के आंसर से कि
कहाँ गलत है, राइट ओके, कहाँ सही है, राइट ओके, राइट, दैट इज द टेक्निक हाउ वी लर्न आवरसेल्फ, राइट ओके। तो एलसीएम तो इट इज 864, एलसीएम कितनी है, 864 है। एचसीएफ कितनी है, व्हाट इज द एचसीएफ, आई थिंक आई नीड टू राइट स्मॉलर, ओके, I'm writing in a smaller way, okay, 864 is the LCM, HCF कितनी दी गई है, 144, now LCM दी गई है, HCF दी गई, this is LCM, I'm writing sorry LCM L, HCF H, okay। अब एक नंबर हमने ए को एक दिया गया, एक कितना था 288 दिया गया, बी वी डोंट नो, वी नीड टू फाइंड बी। नाउ ये तो इजी है, नाउ इट इज इजी, यू जस्ट हैव टू ट्रांसफर द नंबर्स एंड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, कैंसिल आउट करना है, उतना ही है। सो अभी इसमें से बी निकालना है, बी निकालना है, तो 864 into 144 by 288। अभी anyone somebody has given the answer, but I want you to know how did you, I think आप इस most of the time अगर ऐसा नंबर्स, इस तरह के नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई का, अगर मल्टीप्लाई जब ऐसा फंस गया तो लगता है कैसा किया है, तो ऑलवेज इट इज यू नो क्रॉस कैंसिलेशन होते हैं उसको, कि आप क्रॉस काटना सीखना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इन तीनों नंबर को या दो नंबर को जो पर्टिकुलर कॉमन फैक्टर इनके है ना फैक्टर्स होते हैं, ओके, डिवाइड कर सकते हैं, उसको ढूंढ के काटना। पर इस केस में आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये 144 है, ये 122 है, सॉरी 288 है, इट सीम्स हमें लगता है ये दिस इज इसका डबल है, राइट, हमें लगता है इसका ये इसका डबल है ये, सो इट्स 2, राइट, 144 टाइम 2 882। नाउ अगर अगेन इज दिस डिविजिबल बाय 2 और नॉट, आपने आई थिंक प्रिपरेशन के दौरान डिविजिबिलिटी एटलीस्ट देखिए, मैंने जो अभी एक पॉइंट ऑफ मल्टीपल टाइम्स टेबल के बारे में बताया, ओके, आप लोग को जो इस जर्नी में जो हम सीरीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट ओके ओके। आपकी एक तो मैंने मल्टीप्लिकेशंस बताया था, दूसरा डिविजिबिलिटी, एटलीस्ट 2 3 4 5 6 7 11 13 17 आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, ओके, इन नंबर का 2 3 4 8 6 7, ओके। अगर इफ okay, since I started with the LCM part, okay, arithmetic part, so if I come back to number system later on, okay, I'll be teaching you this also in a very आपको आसान तरीके से कैसे करना है, I will teach you that. Till then आप कोई भी स्टडी मटेरियल उठा के इन चीजों की रिवीजन घर में करनी चाहिए, राइट ओके, रोज प्रैक्टिस में, राइट ओके। नाउ इसको कैंसिल कीजिए, 2 टाइम, ओके, 2 टाइम 4, 2 टाइम 3, 2 टाइम 2, then it comes out of 200 and 432। हमें क्या चाहिए था, what we are looking for, we are looking for a number b in this formula, then b comes out to 432 and the answer is 432, right, so you got an answer 432, okay। so आपने इसमें 432 आंसर आपको मिल गया, राइट। सो somebody I think here सुस्मिता दीजी, okay, she answered product of two numbers, formula भी सही है 1 and your answer C 432 also correct, so uploads to her and others also uploads her, okay। now so this is the फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन जब एलसीएम एचसीएफ पे पूछा जा सकता है एग्जाम्स पे, राइट। आपको अधिकतर एग्जाम में यू विल फाइंड सच ऑफ क्वेश्चंस, इतना वो डिपेंड करता है व्हाट लेवल ऑफ एग्जाम वी आर अपेयरिंग, ओके ओके। सो इन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, ओके, जो हम शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकस राइट नाउ, अभी वो चल रहा है, फोकस कर रहे हैं, शायद दिस विल बी द डिफिकल्टी लेवल अ बिट हायर देन दैट, बट आई नो यू कैन क्रैक if you know this solve question easily। so most important part, yes, again like before to remember is this and this you can do। आप ये कब कर सकते हैं, जब आप कभी भी प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, ओके, कभी भी प्रैक्टिस करने बैठ जाओ और सामने आपका फॉर्मूला बुक, वो फॉर्मूला बुक मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपने जाके मार्केट में खरीदा, राइट ओके, मार्केट में बहुत सारा मिलता है, राइट ओके, राइट, खुद के हाथ से बनाया हुआ A4 पेपर में या कोई नोटबुक में खुद से बनाया हुआ, राइट ओके, जो आपने खुद के रेफरेंस के लिए,
और ये सब ऐसा नहीं कि आप लंबा चौड़ा कुछ लिख रहे हो, आप ऐसा लिखना चाहिए कि जो आपको समझ आए। ओके, ऐसा होना चाहिए जो आपको सिर्फ समझ आए, कोई थर्ड पर्सन आके देख रहा है तो उसको कुछ समझ ही ना आए। इतनी शॉर्ट, जैसे कि मैंने आपको न्यूमरेटर के लिए n दे दिया, डिनोमिनेटर d दे दिया, ये अगर आपको घर में तैयारी करते समय तो आपके पास न्यूमरेटर ये हर पेज में न्यूमरेटर देखने का नहीं होगा। अब तो आखिर यू नीड टू डेवलप अ टेक्निक कि आप न्यूमरेटर को आप n से रिप्लेस कर दो, कहीं आप न्यूमरेटर लिख के ब्रैकेट में n लिख दो या कोई भी सिंबल लिख दो आप, राइट? ओके, ताकि आपको इस तरह से आपकी खुद की फॉर्मूलाज डेवलप करनी चाहिए। 6 महीना प्रैक्टिस करें तो 6 महीना प्रैक्टिस के बाद आपका खुद का एक फॉर्मूला बुक रेडी होना चाहिए, राइट? ओके, क्विक रेफरेंस के लिए, एंड दैट हमेशा पढ़ते समय निकाल के सामने रखना चाहिए। कौन सा टॉपिक आज करे उस टॉपिक को फ्लिप करके शुरू करना चाहिए कि कौन सा बात क्या है, राइट? ओके, सो विद दैट we come to solve this question and we'll proceed to next. Okay, हम दूसरा type of variant question देखते हैं। We solve this up fifth, I think. Now हमने पहले यहाँ पे we find the LCM of a fraction, right? हमने यहाँ पे जो पहले वाला था it was LCM, है कि नहीं? Question number third question was about LCM, right? Third question was about LCM. Now you have, okay, now you have okay, now you have HCF, fractions की HCF, but I have not changed the number. Okay, right? The question is हमने आपका questions वो change नहीं किया है, so sorry, let me have for the so I have not changed the, हमने आपके लिए numbers जो fractions थे उस fractions के change नहीं किए, right? I have not changed the fractions, right? Okay, but the term has changed, HCF ढूंढना है अभी। Can anyone write? Can anyone of you write what is the formula to find the HCF of fraction? Can anyone of you write what is the formula to find the HCF of a fraction? We need to first write down the formula. Formula क्या है? Anyone? I have given in the page formula. What is the formula? Formula क्या होती है उसकी? Okay. Now HCF of products. Okay. Now anyone in the class? Okay. So now, okay. What is the formula? We have the before, now here it's similar, there is not much change. Formula equals to, अगर fractions की HCF of fractions हम इस पे लिख रहे हैं HCF of fractions. Okay, I'm writing this here, HCF of fractions. Okay, HCF of fractions equals to, okay, very simple, HCF of numerator for n and LCM of denominators d. अभी देखिए, जो पहले LCM ढूंढने का फॉर्मूला था और HCF ढूंढने का फॉर्मूला है, उसमें से दो ही फर्क है। ऊपर वाला पहले LCM होता था, ओके, ऊपर वाला पहले LCM होता था, अभी HCF हो गया, नीचे वाला HCF होता था, अभी LCM हो गया। The two part, this you will find that this is not changing. So just HCF और LCM अदला बदली करना है और you got the formula. So अपनी जो फॉर्मूला है, जो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला चाहिए इस क्वेश्चंस को, दिस इज दी फॉर्मूला। ओके, नाउ अभी इस पे सॉल्यूशन देखिए, आप सॉल्यूशन देखिए कि HCF ऑफ न्यूमरेटर्स बोला, अभी इसमें HCF ऑफ न्यूमरेटर्स क्या है? न्यूमरेटर्स इक्वल्स टू 5, 1, 3. So what will be the HCF of this? इसकी HCF क्या होगी? What will be the HCF of this questions? Highest common factor? हाँ, what will be the HCF? Okay, now you can see that these are all prime numbers. So 1, yes or no, right? Highest common factor that can divide all three numbers, yes or no, right? And next, LCM of denominators, you find the LCM of denominators क्या होगी? LCM of denominators क्या है?
डिनोमिनेटर्स क्या है 8, 2, 4. What is the least common multiple of 8 to 4? 8 to 4 की least common multiple क्या है? So LCM of 8 to 4 will be, how will you find that? Let us try to see also here, okay? ताकि एक बार recall भी हो जाएगी. Let's say 2, 4, 8, right? We got 2, 1, 2, 4. Again we start 2, 1, 2. How much you got? What is the formula? 2 into 2 into 2. Then LCM is 8. Now, so we have that LCM as 8, right? LCM as 8, right? Okay. Then what we have to find? We have to find the HCF of this fraction. Therefore, HCF of, आप देखिए इस पे HCF of 5 by 8, 1 by 2, okay, इक्वल्स क्या बोला था इसमें? HCF of न्यूमरेटर की HCF कितनी आई? 1, right? 1 आई. Then what is the LCM of denominators? 8. So that's 1 by 8, right? Okay. Any questions here? Okay. Then let me answer the chats, okay, right? Let me answer the chats, okay, right? Okay, so this is the questions, and so that's how we approach. HCF होती है तो that formula use करके approach करना है, okay, right? Next, the HCF of two numbers is 29 and their sum is 140. What are the numbers? Okay, now this type of questions, okay, this type of questions are very frequently asked. Okay, ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है. Okay, right? ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है. So I think slowly the difficulty level is increasing, right? So we'll try to find out what is the question about. The question is about the HCF of two numbers is 29 and their sum is 1. What are the numbers? बोला यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? HCF दिया गया है. नंबर्स के HCF 29 है और sum 177. Okay, so how do you approach? हम इसको कैसे approach करेंगे, right? Okay, how do you approach this? So solutions पे, how do you approach this question? Solutions पे क्या करेंगे आपको? First आप presume कीजिए कि x and y, okay, x and y are two primes, co-prime numbers. Okay, let आप ऐसा कीजिए, let 29x लीजिए और आप कुछ भी लिख सकते हैं and 29b y be the, you assume be the two numbers. Let, हमने let बोला, right? Be the two numbers, हम ऐसा मान लीजिए. अभी इस पे जो 29 है ये यहाँ की जो HCF है, यहाँ given HCF दिया गया है क्वेश्चंस पे, right? Okay, and x and y we are choosing two numbers randomly which are co-prime. Okay, where x and y are co-prime. ठीक है, where x and y are co-prime, right? Co-prime है. Then the question क्या बोल रही है? So and the sum is 174. Okay, the HCF to sum जो है आपकी 174 है, right? Okay, they are saying the sum is 174. मतलब according to question, okay, according to question, according to question, क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या बोल रही क्वेश्चंस? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि जब आप 29x plus 29
y को प्लस करते हो तो इसका सम जो है द सम इज 144, यानी कि आप दोनों को प्लस करते हो तो सम 144। एंड बेसिक अप्लाई हम इसको कॉमन फैक्टर लेते हुए 29 दोनों में कॉमन है, 29 को ले लीजिए और x और y को ब्रैकेट करने प्लस हो गया, इसका सम कितना है 174 है। अब हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 174 डिवाइडेड बाय 29, 174 divided by 29. Okay, so 129 divided by 29. Now here you can see 29 divided how much? Probably I think if we put 6 here, अगर यहाँ 6 डालते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 आएगा। ट्राई करते हैं 29, ओके ट्राई करते हैं, राइट, ओके 6 ट्राई कर, 6 डाल के ट्राई करते रहे। 29 मैंने कैसे ट्राई की, क्योंकि हमें पता है 6 into 9 54 होती है, राइट, और जो डिवाइड करने का नंबर यूनिट डिजिट पे 54 है, टेस्ट कर सकते हैं, राइट, यस और नो। सो लेट पुट 6, ओके नाउ 54 है, ओके ओके नीचे देखिए 29 into 6, right, 54, 5 in hand, 6 to 12, 12 plus 5, 17. That means we get the right answer. That is 29 time 6 से कैंसिल हो रही है, तो हमारी x plus y की वैल्यू 6 आई। But what we are looking for, what are the numbers बोला, हमें दो नंबर्स, वो दो नंबर्स हमें ढूंढना है जिसकी HCF 29 है, वो दो HCF 2 हाईएस्ट कॉमन है जो 29 है, वो नंबर निकालने हैं। पर ये x and y प्लस 6 तो दो नंबर्स नहीं है, देन हमने दो नंबर्स अज्यूम की थी कि दिस आर द टू नंबर्स, हमने अज्यूम की थी। देन द टू नंबर्स आर नंबर्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द नंबर्स, ओके नंबर्स क्या होंगे फिर, देन टू नंबर्स आर 29x एक होगा। अभी हमें okay now okay wait, okay I think I straight away come to the answer, right, okay now instead of that, okay right, instead of we need to reason something, इस पे आपको कुछ एक सोचने की आवश्यकता है यहाँ पे कि now हमें x plus y 6 मिल गया, पर हमने ये बोला है कि x y are co-prime when are two numbers co-prime कब होते two numbers co-prime, when two numbers are co-prime, when their HCF, when HCF of two numbers, जब HCF is 1, they are co-prime, right, for example 3 5, HCF कितनी इन दोनों की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, co-prime। so अभी दो co-prime नंबर, ओके दो co-prime नंबर जब ऐड करते हुए when you add जब दो co-prime numbers का आप ऐड करते हैं, when you add two co-prime numbers, okay when you add two co-prime numbers and you get a value 6, okay मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ, आप x लीजिए 6 लीजिए, ये आपको क्लैरिटी है कि दोनों की HCF जो है सॉरी HCF जो 1 है। देन आप इस पे देखिए कि अभी लेट अस से 1 5 6 होता है क्या, 1 5 को-प्राइम है कि नहीं, HCF दोनों का क्या है 1, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 2 3, आर दे को-प्राइम, आर दे बिकॉज़ देयर HCF इज 1, 2 and 3 HCF 1 1 सेकंड। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, को-प्राइम्स, मतलब दे शुड बी प्राइम्स, राइट, ओके देन द अदर पॉसिबिलिटी इज 3 by 3, राइट। तो मतलब देयर आर 3 सेट्स ऑफ नंबर, ओके देयर आर 3 सेट्स, 3 सेट है जिसकी 1 5 1 है, राइट, ओके 3 सेट्स है 2 3 1 है 3 3 जिसका सम 6 हो सकता है, राइट, जिसका सम 6 हो सकता है। अगर सोचो हमने तो यहाँ पे फाइंड टू नंबर्स, अगर हम अभी हमें कुछ दो नंबर, वी नीड दैट टू नंबर्स, राइट, हमें वो जो दो नंबर्स चाहिए, तो दो नंबर्स क्या क्या लिए थे हमने, एक तो 29, ओके एक तो 29x, एक तो 29x था, राइट,
ओके, एक 29x था। अब हमें इनमें से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ओके, फर्स्ट हम फर्स्ट वाला वैल्यू लेते हैं, राइट, फर्स्ट वाला वैल्यू लेते हैं 29 into 1। ओके, 29 into 1 कितना है, हाउ व्हाट विल द वैल्यू, 29 into 1 29, 29 into 1 29, राइट। दूसरा 5 ले लेते हैं, 29 into 5, so 29 into 5 मतलब 5 टाइम 9 45, 5 4 in hand, 5 टाइम 2 5 टाइम 9 45, 5 2s are 10 14 145। नाउ आपको दो नंबर्स मिले यहाँ पे, एक 29 एक 45। अभी इसको टेस्ट क्वेश्चन के हिसाब से टेस्ट करके दीजिए, यू ट्राई टू टेस्ट एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से टेस्ट कीजिए, राइट, कि HCF to 20 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 29 है, एंड देयर सम कितना हो रहा है, 174 बोला था, 145 प्लस 29, 5 9 14 6 7 and 1, that means these are the two numbers, not only these two numbers, if you take these two set, ये वाला सेट भी लिया तो आपको ऐसा ही कुछ नंबर्स मिलेंगे जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 29 होगा, और ओके राइट, एंड सम 174 होगा, राइट। ओके राइट, सो दिस इज हाउ यू अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको, by assuming in this manner when it is HCF given or LCF given in this manner, and presuming that when you any random number variables, आपने variables को लिया तो इन variables को prime से assume करके आपको क्वेश्चन को इस तरह अप्रोच करना है, दिमाग एज पर दी क्या क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, राइट। ओके देन, so any questions? Okay, now finally we'll come to the last question of the day, right? Okay, I leave this question 7 for you. This is I'm leaving this question 7 for you, if those who are for you, just to just to solve it, right? Okay, try to solve it, what the question is saying, and if you cannot, or if you are solving it, you can pass in the comment, right? And there is also HCF of 3. Okay, the same question, question number 7. Okay, the type of the questions I have solved, question number 7 and 8. Okay, you try it. I have given you the formula and the techniques to approach it. Now, if you find any difficulty in solving those questions, okay, right, if you find any difficulty in solving those questions, in the next class we'll be dealing, but we'll start with a new this. Okay, okay, now, so this is the find the HCF. Okay, there is 9 also, right? Okay, you can watch here, there are 3 questions, I'm leaving it for you, right? Okay, question number 7, 8, 9. Okay, right, so anyway, this is the आज की जो क्लास है, right? Okay, this is the end of today's class, right? Okay, right, so at the beginning I have told you, right? Okay, so this journey is not about competing with anyone's. Okay, this journey is about competing with ourselves. Okay, हम आज के मुकाबले में कल कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इसकी कंपटीशन है, राइट। ओके, 1000 लोग के साथ compete करना वो एक मेंटालिटी है, खुद के साथ compete कर सकते हो कि नहीं, राइट। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो and I'm thank you for being coming session, and I'm winding up this, and next time we'll proceed with अगली जो क्लास आने वाली है, अगली जो क्लास आएगी सेम LCM and HCF होगी, पर अगली जो क्लास आएगी सेम जो क्लास होगी we will be dealing with that. Okay, पर HCM LCM HCF की different patterns of question based on different formulas, like आपने सुना है कि what is the least number that can divide, okay, that can divide, let's say what is the least number, okay,
when a number divides three numbers, set of number x y z divide करता है, remainder r left करता है, then what is the number? Okay, or what is the great four digit number that can be added or subtracted to get a perfect square? Something that type of questions. I'll give you the formula and some other facts or important notes to remember, to आप उस सबको की LCM और and I think with that class we'll be clearing. Okay, बाकी practice questions तो होगी after we finish these things. We'll direct जो questions होते हैं exams के, okay, उसका एक दिन one class 1.5 1 घंटा राइट, ओके, 1 घंटा 2 घंटा 2-3 क्लासेस में, लाइव क्लासेस में ही मैं पढ़ाऊंगा, ओके राइट, ओके. सो फॉर टुडे, थैंक यू.